Hello बच्चों, let's have a look at this question which says classify the following species into electrophiles and nucleophiles. तो हमें ये चार species provided हैं which is SO3 sulfur trioxide, BF3 boron trifluoride, water molecule and OH group. तो इन species को हमें electrophiles और nucleophiles में classify करना है. The key concept here is nucleophiles and electrophiles. तो पहले हम इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स समझ लेते हैं ये टर्म्स कौन से होते हैं देन वी विल बी एबल टू क्लासिफाई दीज स्पीशीज इनटू और एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर हम टर्मिनोलॉजी को देखें तो इट इज composed ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड फाइल्स. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन loving. Okay, so all those species which are electron loving means negative charge loving are known as electrophiles. Okay, तो electron loving कौन सी species होंगी which are electron deficient in nature? Okay, that is why they will be attracted towards electrons. तो electrophiles कौन सी species हो गई जो electron loving species हैं मतलब कि electron deficient species हैं. तो they either have a positive charge on them या फिर उस पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा जो कि उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करे. राइट. तो न्यूक्लियोफाइल्स देख लेते हैं क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल्स in the similar manner, these are nucleus loving. That means these are positive charge loving species. And since they are positively charge loving or they are attracted towards positive charge, these are electron rich species. Okay. So because they are electron rich species, they are attracted towards the positive charge. अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जो स्पीशीज हमें प्रोवाइडेड है. फर्स्ट स्पीशी इज SO3 which is सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हम देखें तो सल्फर इज बॉन्डेड टू 3 oxygen atoms. Now oxygen here is highly electronegative atom. Okay, so it will tend to attract the electron density towards itself and thus creating a positive center on sulfur. Okay, in this manner. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करके ऑक्सीजन एटम सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है. इट इज और इट बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज. मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट इज एन electrophile. Okay, so sulfur trioxide is electrophile. Now let us look at the second option which is BF3. अब BF3 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो it has बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो it has 3 valence electrons of boron and 3 electrons from 3 फ्लोरीन एटम्स. तो जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ये फर्दर 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. एंड ऑक्टेट के लिए हमें कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स इट हैज एन इनकम्प्लीट octet and thus it is an electron deficient species. तो electron deficient species कौन सी होती हैं? These are electrophiles.
Okay, now the third option or the third species provided to us is water molecule. Now, water molecule, as we know, it has two lone pairs on oxygen. Okay, two lone pairs. That means it is an electron-rich species. And electron-rich species कौन सी होती है? These are nucleophiles. Similarly, OH group, तो it is not hydroxide group, it is alcoholic group. OH group जो attached होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन के पर क्या प्रेजेंट है? Two lone pairs. Okay, which it tends to donate to the group it is attached to, and we can say that it is an electron-rich species, therefore it is also a nucleophile. Okay, so that means SO3 and BF3, these molecules are electrophiles or electron-loving species, whereas H2O, water molecule, and OH group, these have lone pair, and because of that, these act as nucleophiles. Okay, so we have classified the following species into electrophiles and nucleophiles. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.